which is what we are coming to, statistical uncertainty of 10, which is square root of that number. Yeah. But this uncertainty is 10 times as large as this one. Now that this uncertainty is 10 times as large as this one, writing this is just going to affect you at the 10% level, but not beyond that. And if the numbers get bigger, then this one is not going to change any time in your experiment. Since we are doing experiment using source when we are seeing far more than 100 counts, that's why you are not writing your result with systematic one. It is a common one depending on this and this comparison. First, scale से किया काम. Statistical uncertainty is 0. Systematic uncertainty is 0.1 centimeter. Since this is 0, hence this is very small. I am not going to quote it. क्यों नहीं हम quote करते थे? Because this number is 0. It's not that you cannot. पैरेलल एक्सेलरेटर के साथ अभी भी ये quote होते हैं. कोई 0.3 सेंटीमीटर देखता है, कोई 0.4 सेंटीमीटर देखता है. सर आधे पे दिख रहा है, सर आधे वाला पता नहीं चल रहा इधर आ रहा है या उधर आ रहा है. मैं देख रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट दिख रहा है, मेरा आपका चश्मा देख रहा है तो वो राइट दिखा रहा है. This still happens. तो आप बेटर मुझे मेजरमेंट की डिवाइस दे दो rather than कुछ और. अगर कि this guy is much less on the other hand, not for this case, but for the case when this is 10 and this is 1. This is the case when तो हम A की uncertainty typically report करते हैं. That does not mean system की uncertainties नहीं है. सिस्टम की अनसर्टेनिटीज है. सिस्टम बिना अनसर्टेनिटी के अभी भी मेजर नहीं होता. सिस्टम की रिपोर्टिंग के टाइम पे डोमिनेंट अनसर्टेनिटी को रिपोर्ट करते हैं. लेकिन अब आप ये सोचना शुरू हो जाओ, जब आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जहां एक एक काउंट पे आपने नंबर डाला है स्क्वायर रूट, तो सडनली आपके पास एक्चुअली लीस्ट काउंट वाज एज बिग एज द स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी. राइट? तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग केयरफुल होना पड़ेगा हमें. It is always the role play between the two. Which wins, we generally report. Does not mean that the other is not there. It is just that it's an implicit understanding that that number is just this one. Make sense? Questions? Questions? Second takeaway point. Though uncertainty, depending on which uncertainty means, we have a typical habit of reporting one. But that does not mean that the other uncertainty is our system. Since we are into this, sir, ये तो internal है, ये external है, तो कोई अलग अलग use करते हैं statistically figure out करने के लिए. That is the saving grace. Statistical physics या statistics जो है वो same तरीके से दोनों में काम करते हैं. And because of that, you have classical statistical physics, quantum statistical physics, only differing in what? The nature of the particles. Particle classical है, fermions है या bosons है, but not in terms of the statistical laws. Laws remain same. This reason is there statistical, because of which the entire course of probability and statistics is mandatory for our purposes. Because statistical uncertainties dominate in our experiments. Makes sense? Now let's just try to figure out experimental uncertainty in our experiment. So हमारे पास है क्या सिस्टम? या तो सिस्टम काउंट करके 0 दे रहा है, या तो सिस्टम काउंट करके 1 दे रहा है. या तो न्यूक्लियस डिके कर रहा है, या तो न्यूक्लियस नहीं डिके कर रहा है. Interestingly, these all processes are binary processes. Yeah. So let's just come to think of it. आप लोगों ने एक मेजरमेंट किया, रियल लाइफ, क्योंकि इट्स अ फंक्शनल वन, सो लेट्स जस्ट से 2 मिनट के लिए आपने एक मेजरमेंट किया. Yeah. Somehow counts you have got. Okay, 100. अब क्या करते हैं? सर आपने पहला बात मुझे कह दी कि मेजरमेंट का रिजल्ट है, तो बिना एरर के तो डाल नहीं सकते. तो मैं ऐसा कर देता हूं कि मैं 100 प्लस माइनस 1 डाल देता हूं. सर सिस्टमैटिक को डाल दिया, बट देन इमीडिएटली आई सेड, ओह नो, दिस इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी. इसका तो मुझे यूज ही नहीं था. अब इस एक नंबर पे आपसे अनसर्टेनिटी कोड करना है. ये अनसर्टेनिटी कोड कैसे करते हैं? सर एक नंबर मिला है, आपको कोई इक्विपमेंट की अनसर्टेनिटी तो नहीं कोड नहीं करनी थी. मुझे तो सिंगल नंबर मिला है. इस सिंगल नंबर से अनसर्टेनिटी कैसे कोड की जाती है इज आवर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इन आवर. That is where the errors portion comes.
we are dominated by statistical errors and quoting uncertainty on a single number which has come from the counting is our first job. So how to go about that? This is where we are basically going forward, and I am taking a kind of a deck route. Okay, आदमी काम पे है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो साइड से निकल रहे हैं, तो साइड से निकलना कहना है कि let me just go back to this probability portion. I'll come back to this because this is a functional question which you want to answer. Do not worry about that. Because something is there, what is probability and what is statistics? Even though we use the word like probability and statistics, what's the meaning of the two words separately? कोई है? कोई भी है? क्लास के इमीडिएट बाद कुछ तो 5 मिनट चाहिए ओनली फॉर क्या प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स सेपरेटली कैसे करेंगे सेपरेटली सर आप फ्लो पे हो फ्लो मत ब्रेक करो चलते रहो बस आने दो समझेंगे सर आप जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है चलो तो वैसा वाला खेल खेल रहे हैं सो आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन जनरली इट्स ऑलवेज गुड कि क्वेश्चन आंसर कहीं तो हम लोग डेवलप कर पाएंगे चीज it starts remember this is where my 5 minutes will become 7 minutes but it is important to communicate to you we are not in the coaching business we are in teaching business what is the difference between the two businesses a coaching has a definite aim मुझे मार्क्स चाहिए सर अंडरस्टैंडिंग रहते मार्क्स चाहिए तो बस चाहिए जेआरएफ निकालना है दैट्स द ट्रिगरिंग पॉइंट बाकी सब तेल है मुझे इससे मतलब नहीं है मुझे ये क्वार्टर मेरी साथी है सर मेरे नंबर आएंगे इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन के टाइप आते हैं मुझे बताओ दिस इज व्हाट द कोचिंग इज आप तो पूछते रहो आप क्वेश्चंस कराते हो मैं क्वेश्चंस करता जाऊं देखते जाऊं कि मैं अपने क्वेश्चन समझ पा रहा हूं मैं अपने क्वेश्चंस निकाल पा रहा हूं फिर क्वेश्चन कर बिकॉज़ जेआरएफ के सेट ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग इनडेफिनिट वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रिसर्च लेवल पे जाने में इंटरेस्ट बट अंडरस्टैंड व्हाट इज टीचिंग Teaching is never about what I am teaching are you able to get. At the postgraduate level, how the teaching evolves. स्कूल में मेरा बच्चा चौथी क्लास में जैसे ही उससे क्वेश्चन पूछा जाता है पापा ये आउट ऑफ सिलेबस है इमीडिएटली बोल जाता है मैं क्यों मैडम ने नहीं पढ़ाया था उन्होंने हाँ करके बताया उसके बाद पूछ रहे हैं अनुस्वार क्या होता है अनुस्वार बताएंगे क्या अनुनासिक बताया था पापा ये लिख दिया मैंने This is what is called teaching at the preliminary or the foundation stage, where we are expecting what is taught to you, are you able to grasp and reproduce back? At BSc level, you are doing same, but at post-graduation level, I mean BSc we should be transitioning, but at the post-graduation level, my aim is what? मैं आपका माइंड न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए खोल पा रहा हूँ कि अगर मैंने आपको क्रेन का चैप्टर 2 के 4 सेक्शन पढ़ने को दिए उसके बाद आप 2 सेक्शन लेफ्ट 2 सेक्शन राइट पढ़ के उसे समझ पा रहे हो क्योंकि अगर आपने वही पढ़ के वही रिप्रोड्यूस कर दिया बेसिकली यू आर डूइंग व्हाट माय 4th क्लास सन इज डूइंग एग्जैक्टली दैट सर आउट ऑफ सिलेबस सर आउट ऑफ सिलेबस सर सारा ही आउट ऑफ सिलेबस माइंडसेट साइंस इज अबाउट माइंडसेट एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इट्स द टीचिंग whether I am able to teach you to open your mind to that field क्यों इतना पैसा पंप कर रहे हैं यार लेक्चरर्स की पोजीशन पेमेंट पे My job is not to give you. आप सोचते हो कि मैं वही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप वही आंसर कर देते हो नंबर अच्छा आ जाता है आपको मेरे पैसे मिल जाते हैं काम हो गया मेरे लिए वो काम बहुत नीचे लेवल पे हुआ आपके लिए काम हो गया आपका एमएससी के नंबर आ न्यू माइनस सिग्मा एक्चुअली न्यू माइनस सिग्मा का पर्पस ये था कि आप उससे थोड़ा सा फ्री हो जाओ आप आ जाओ वापस इस साइड पे कि फिजिक्स के लिए ओपन हो जाते हैं बट देन इतने सारे एग्जाम्स सर कहाँ तक फ्री हो पाएंगे मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट Teaching is not all about coaching. Teaching at the post-graduation level is about
opening your mind to the understanding whether you are able to grasp a reasonable one in the class so that you can move forward. For me, if my students go through Cranes chapter 2 without looking at the first chapter, first page of Crane, I actually failed in teaching. I might have done good in terms of कि मैंने जो आपको बोला आपको वो समझ में आया, पर उसके अलावा आप देख ही नहीं सकते तो मैंने किया क्या? Teaching में I failed. I'm telling you, this is how the teaching is work. It's not about the entire system. 2 इंटरनल असेसमेंट हुआ करते थे मेरे टाइम पे, एक इंटरनल असेसमेंट कर दिया गया केवल एक रीजन से, एब्जॉर्प्शन के बाद ओपनिंग द माइंड नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के बाद स्पिटिंग ओवर हो रहा है कि वॉमिट आउट, नंबर लाने, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर वॉमिट आउट. यू डू नॉट गो इनटू दैट मोड ऑल द टाइम. यू डू इट फॉर योर CUET पास करने हैं, so 3 मिनट मैंने मिस किए. While this coming back, probability is what we are trying to understand. We have, since it's a functional one, तो यही वाली बात, n collection of identical nuclei, source एक है cesium या फिर अल्फा कोई एक सोर्स आप magnesium. Now identical nuclei हैं, इसका मतलब इनका decay constant तो डिफाइन है, right? Now I will say total n. You can define 100, 10,000, whatever number, जो भी चाहिए. And collection of identical nuclei with binary outcomes. Now, what is binary outcomes means? दो outcome either decay or survive. Which means Iran versus US. Either decay or survive. So they are ME, mutually exclusive. If it decays, then it doesn't survive. If it survives, then it did not decay. Which means that if I can think about the probability of decay and probability of survival, and I add the two, what will be the result? This will be 1. This is what the mutual exclusive events are. MP. Any confusion? Mutually exclusive? No. So binary outcomes with this. Now let me look at this. एक particular nucleus को मैंने focus किया. अब let's say एक certain time के अंदर वो decay करा या नहीं करा. Those are the only two possibilities. So I call each of us, me looking at each of the nucleus as a trial. What is a trial? Trial is कि अगर मेरे पास 100 nucleus है तो मैं 100 के nuclei है तो मैं 100 के 100 nucleus को देखूंगा. और इंडिविजुअल में चेक करूंगा आप decay हुए थे या नहीं हुए थे, आप हुए थे या नहीं हुए थे, आप नहीं हुए थे, 2 मिनट करने. राइट? तो इसका मतलब ये हुआ ट्रायल्स तो 100 ही होंगे, पर अब मैंने कहते मैं डिके में इंटरेस्टेड था. सो आई हैव एन आउटकम ऑफ द ट्रायल. सो देयर आर 2 वर्ड्स व्हिच आई कम अप विद. वन इज ट्रायल और ट्रायल्स, अनदर इज आउटकम. आउटकम केवल 2 थे, या तो डिके और या सर्वाइव. आउटकम और कोई नहीं थे. बट 100 की ट्रायल में कितने डिके करा और कितने सर्वाइव किया, that's the number with which we are starting. Now why I have come up with this, I won't go into the details of general one, but हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है कि n कलेक्शन है जो कि फिक्स्ड है. बाइनरी आउटकम से हर एक की पॉसिबिलिटी है डिके की और सर्वाइवल की. ईच न्यूक्लियस के लिए वो फिक्स है. क्यों वो फिक्स है? हर न्यूक्लियस के लिए वो फिक्स्ड और सेम है. So can you give me what is the probability of the survival and probability of the decay in nuclear decays? So decays है and survival. Do I know this law? नहीं सर. सब अब तो ये करेगा. What is this number? Anti is the atoms which have or the nuclei which are left. surviving. So survival probability of a particular nucleus is pretty simple. E raised to a minus lambda t. Because this is a fraction. कितने बचे थे सर? और कितने टोटल थे? What is the decay probability then? Excellent.
Now, if I ask you if delta t is much less than t half, जनरली आप एक्सपेरिमेंट कितने दिनों के लिए, कितने मिनट के लिए करते हो? 2 10 20 मिनट के लिए. हाफ लाइफ कितने की है? ईयर्स की, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, which means delta t is much smaller than. Yeah. If I ask you what is the probability of the decay when delta t is much less than t half, कैसे निकालेंगे भाई? This is equal to 1 minus e minus lambda delta t, because delta t is the time in which I want to figure out this. Probability that the nucleus selected at random decays in time delta t. Nucleus selected at random decays in time delta t. This is 1 minus e raised to 1 minus lambda t. क्या आप इसके बारे में कुछ सोच सकते हो इस केस के लिए? So lambda is related with t half कैसे? E raised to power, so t half delta t is less than equal to 0.693 divided by lambda. Yes. Lambda delta t is much less than 0.693, which is basically 1. If lambda delta t is much less than 1, what do you do? Exponential है. Sir, फौरन मैं तो एक्सपेंड कर लेता हूँ and I will retain to फर्स्ट ऑर्डर टर्म. आप जा तो सकते थे पर अब जाने की जरूरत ही नहीं है, because this quantity is small, so lambda delta t square delta t cube बहुत ही small होने जा रहा है, which is what? Lambda times Delta t. delta t. Now remember that lambda times delta t is a pretty small number, which means जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 2 मिनट के, chances that individual nucleus is going to decay is pretty small, right? So this peak of decay is very small. तो मैं कैसे फिर वो देखने की कोशिश करता हूँ? I increase to large number so that n times p, this is large, infinity, this is small, almost 0, but finite number. And at that point I say that for the process which I have told you, sir, this was a binomial distribution. It's a binary mutual exclusive. But it is in the regime where the probability of the decay is pretty small in delta t time and the number of collection of the nuclei is pretty large. Hence we use Poisson distribution for this process. So the reason for using a particular probability distribution has to come out from the nature. If there are 6 possible outcomes, it's a multinomial, right? It is not a binomial distribution. Depending on what kind of problem it is. In nuclear physics, the problem is like this, that we have n identical large collection of nuclei. Each of the nucleus can only either decay or survive, with the probability of the decay being quite small. All trials are independent. One nucleus decaying is not affecting any other nucleus. In that case, we use what we call as the Poisson distribution. So next time I will be discussing the Poisson distribution. I will be defining the error and the error propagation for a single number. That next time is now going to come after your test, which means I am not going to take class on Monday. I will be trying to give you the functional portion related with our statistical portion on Tuesday itself. If needed, I may extend a bit, but not by the future. That's my opinion. Thank you. Attendance sheet, yes. Attendance sheet दे दो भाई, प्रश्न पूछते जाओ.
अभी एक और ट्यूसडे मैं तुम लोगों को ट्यूसडे के आने के लिए जबरदस्ती कम कर रहा हूँ। दैट्स द डे व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग कि आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे सोच सकते हैं। सर जब ये लैंडर डेल्टा टी बहुत स्मॉल था तो उसको इंक्रीज करने के लिए क्या किया था हमने? इसे इस लैंडर डेल्टा टी को probability टाइम को। बढ़ा दिया ना, डेल्टा टी बढ़ा दिया। तो हमने क्या करने की क्या जरूरत थी? सर क्या बढ़ाने की जरूरत थी ताकि हमको काउंट मिले ताकि अगर वो डिग्री नहीं